Namaskar, this is Dr. Hema Divakar, the chairman of ARTIST, which reads as Asian Research and Training Institute for Skill Transfer. At the ARTIST Skill Gurukul today, we are proud to be conducting the first ever quality training program for safe deliveries. It is now known that in the entire country, many women are delivering in hospitals and institutes rather than in homes. 80 to 95% of the women who deliver in the institutes. The question that we have to reflect on is, are they getting what they deserve? Are they getting the quality of care in these institutes? Or is it just that the venue is shifted from home to the hospitals and there's just nobody competent enough to render the quality service, prevent the complications, save lives, and give her the better care? So what's the whole point in this shift from home to hospital if we do not ensure that the lives are saved? So in this context, when we did a baseline survey in the Marigold chain of hospitals in the entire Rajasthan belt, involving the Jaipur, Jodhpur, Kota, Alwar and Udaipur districts, and took into our fold about more than 75 private institutions which are rendering care for the women and the newborn, we recognized that the steps that they need to follow when the woman is admitted at delivery, the steps that they need to follow during the process of delivery, the care that they have to offer if she gets into complications, and how they would manage the newborn, what is the care and advice that they would give on the next day of her delivery, and with what advice would they send the mother and baby home for a short-term and a long-term follow-up, including the immunization and the contraception. When we studied this, we were very disappointed to find that they don't even match about 20 to 22% scores in terms of the quality rendering of the services. So it is our mission that through ARTIST, we will master train a set of teams from the hospitals, both the doctors and the paramedical staff who are the frontline healthcare providers, or those in the front line which actually handle these cases. Their teams have to be trained in each and every micro step and aspects of the A to Z of how to render the quality delivery care. So this whole concept of skill transfer is getting translated into practice at the 3-day workshop and a continuum of skills training, creating skill stations from readiness to delivery, as in preparing the equipment, from the actual conduct and assessment of a normal delivery process, for the care and resuscitation of the newborn, and for the care of the mother in terms of her postnatal and contraceptive services, and also the advice that they would give to the newborn. So everything in the form of role plays, mimicking with simulators, namely the mama natale and the neonatale, where they get the first-hand experience as if they were conducting the delivery process live, as if they were handling the complications in a real-time situation. So the mock drills and the rehearsals and the kind of exposure that they get with the hands-on, we recognize that when the teams are called in to perform a delivery process, for example, the first time on, they're about nearly there 30-40%, all right, and then after the one round of coaching and trying to tell them this is the right way to do, they get to about 60-65%. Then the third round of the skill drill, they get nearly to 80-90%, and there's always another attempt made for them to score 100 on 100. And that is how intense these training programs are, and that's how hands-on these training programs are. So when they walk away from this course, no matter whatever the environment or the circumstance, it is so well ingrained in their system that the process flow will be as flawless as we expect it to be. Now, these master trainers who have now arrived from Rajasthan
from the Hindustan Latex Family Planning Promotion Trust, that is the HLF PPT, which has a franchisee unit of hospitals known as the Marigold Hospitals in the entire Rajasthan belt. So whoever is in the chain of the Marigold Hospital in all the geographies that I mentioned, these master trainers will go back and take individual group trainings, both in a common setting and also a supportive supervision in their own private hospitals. The most difficult aspect, as you know, is to change the behavior, because somebody who has been doing the same things over and over again for many years will not change suddenly with one training course. So our champions are going to be going there and training and retraining, helping them unlearn and relearn the techniques in protocol-based practice for safe delivery, to let them do the things in the manner that they're expected to do, and to make sure that as how they have reached the 100% score, each of these institutes will move on from 20% to 40% to 60% to at least 80%, when we would think that most of our job is done and many lives of both the mothers and the babies would be saved. So to step up the quality of care, both maternal and the child health care, this is the first major attempt by a private setting, as in the Artist Skill Gurukul, who is imparting this intense skill transfer, hands-on training in safe delivery processes to the teams of hospitals in an attempt to master train them in a cascading manner, so that this learning reaches in a practical and a pragmatic way to every institute in the first phase in the geographies that is mentioned. Of course, we recognize that the country is large, and this is just a small step for a great beginning for many more private hospitals in the entire Uttar Pradesh and Bihar belts, and then on to Assam and other parts of the country, and wherever the HLF PPT Marigold chains are into the franchisee unit. It's our dream that after this training, each and every such private institute will be recognized as a very powerful chain imparting quality services of a very high standards to the women and the newborns in this great country. I am Dr. Ranjan Kumar Pejawar, Professor of Neonatology, Bangalore. Newborn health is of utmost importance if our overall health indices have to improve. We have a neonatal mortality of 29 per thousand live births. Nearly 28 million babies are born in our country every year, and we lose 29 for every 1,000 babies. This is a sad affair. The three most important causes of neonatal deaths are infection, difficulty during delivery or just before delivery resulting in difficulty of the baby to cry or take the first breaths, and lastly the low birth weight and the preterm babies. These are the three important causes. So training people to recognize danger signs in a newborn, even before that training them to learn about simple ways to resuscitate babies, will go a long way in improving our newborn health, in reducing our newborn mortality. Resuscitation is an art, is a skill. It has to be performed systematically and without any anxiety and in a timely manner. So that is why such programs are very important. Every person who is involved in the mother and child health care should be able to resuscitate a newborn. A day should come that our neonatal mortality should reach single digit. I hope by 2020 our neonatal mortality will be half of what it is. A developed nation should have not only economical growth, social growth, but it should also have good standard of living and very good health care.
नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आभा झा है और मैं HLF-PPT में नेशनल मैनेजर मेडिकल सर्विसेज हूँ। HLF-PPT वाज इस्टेब्लिश किया गया था HLL के द्वारा एक ट्रस्ट के रूप में, और तब से ये जर्नी, ये यात्रा शुरू हुई HLF-PPT की। शुरुआत में हम लोगों ने मेरीगोल्ड हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किया और ये शुरुआत हुई 2004 में, और इसको देखने के लिए कि ये कितना सही तरीके से कम्युनिटी को जहाँ ज़रूरत है स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की उनको दिया जा सकता है, एज ए प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट 3 सेंटर्स इस्टेब्लिश किया गया। और उसे कुछ दिनों तक चला के ये देखा गया कि ये क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, कम्युनिटी जहाँ नीड है उसको मेडिकल सर्विसेज और सस्टेनेबिलिटी, ये तीनों चीज़ें उसके द्वारा दी जा सकती हैं कि नहीं। उसके बाद USAID द्वारा फंडिंग हुई, जिसमें मेरीगोल्ड हॉस्पिटल जो यूपी में इस्टेब्लिश किया गया। यूपी में जब इसे इस्टेब्लिश किया गया उस दौरान बहुत चैलेंजेस थे। सबसे बड़ा चैलेंज ये था, मेरीगोल्ड हॉस्पिटल नेटवर्क के बारे में यूपी के प्राइवेट सेक्टर को कोई नहीं जानता था, और प्राइवेट सेक्टर जैसा आप जानते हैं अनरेगुलेटेड सेक्टर है, अनलाइक पब्लिक हेल्थ सेक्टर। सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम या जो भी सुविधाएं हैं वो रेगुलेटेड है सरकार द्वारा, जबकि प्राइवेट रेगुलेटेड नहीं है। इसके द्वारा हम लोगों ने मेरीगोल्ड सेंटर्स के द्वारा प्राइवेट प्रोवाइडर्स को रेगुलेट करने के लिए सबसे पहले जो शुरुआत हुई यूपी में हुई, जिसमें लेवल 0 हॉस्पिटल जो कि HLF-PPT के द्वारा इस्टेब्लिश था, फिर लेवल 1 हॉस्पिटल जो फ्रेंचाइजी मॉडल पे था, जो हमारे प्राइवेट प्रोवाइडर्स थे उन्होंने L1 के द्वारा किया, और L2 जो रूरल, अभी हम लोगों ने चेंज किया, L1 को हम बोलते हैं अर्बन और L2 को बोलते हैं रूरल। और मेरी तरंग नेटवर्क जो कि हर हॉस्पिटल के चारों तरफ होते हैं, और ये वॉलंटरी वर्कर्स होते हैं, स्वास्थ्य कार्यकर्ता इनको आप कह सकते हैं, जो कि मोस्टली महिलाएं होती हैं, और ये कम्युनिटी में जागरूकता, जो समुदाय है उसमें जागरूकता उत्पन्न करती हैं, और उस जागरूकता के द्वारा माताओं को ये समझाती हैं कि माता गर्भवती महिलाओं की देखभाल, जो माता धात्री महिलाएं हैं उनकी देखभाल, और जो बच्चे हैं, शिशु हैं, उनका अच्छे से कैसे टीकाकरण, उनको अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग, उनके लिए अच्छे से बाकी जो हम लोग कहते हैं वीनिंग, सब सारी सुविधाएं उनको कैसे प्रदान की जाए। क्योंकि आप पता होगा कि हमारे देश में, हिंदुस्तान में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक है। तो ये एक हमारा इंटरवेंशन है जिसके द्वारा हम अपने देश में, खासकर यूपी में, कोई भी इंटरवेंशन जब आप करते हैं पूरे देश में, भारतवर्ष में, जो कि दूसरा सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है, उसमें यदि आप यूपी को, जो कि मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, वहाँ इंटरवेंशन नहीं करते हैं, वहाँ मैटरनल मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी को रिड्यूस नहीं करते हैं, तो सारा हमारा जितना भी नेशनल एवरेज है वो कम हो जाता है। हम लोगों ने मिलके एक ट्रेनिंग प्लान चॉक आउट किया है, जिसके द्वारा हम महिलाओं को जो कम्युनिटी में हैं, हमारे सेवा प्रदाताओं को जो कम्युनिटी में हैं, प्राइवेट प्रोवाइडर्स, अर्बन एरिया में स्पेशली, हम क्वालिटी बेसलाइन असेसमेंट करेंगे टू सी व्हाट इज़ देयर क्वालिटी रिलेटेड स्टेटस, करंट स्टेटस, एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 2-3 years डाउन द लाइन हम ये देखेंगे कि ये इंटरवेंशन के बाद उनका कम्युनिटी में जो इन्फेक्शन, मृत्यु दर बच्चे, शिशु एंड महिलाओं का है, उसमें कुछ कमी आई है या नहीं। मंसीरा खान फ्रॉम राजस्थान। मुझे यहाँ 3 दिन की ट्रेनिंग में भेजा गया था, तो यहाँ सबसे अच्छा तो मुझे यहाँ सीखने का मौका मिला
इससे पहले मैं IUCD में वर्क करती थी, लेकिन यह ट्रेनिंग मुझे IUCD से भी ज़्यादा बेस्ट और बहुत अच्छी लगी, जिसमें मुझे सीखने के लिए बहुत कुछ मिला। इसमें हम मेनली हमारा फोकस होता है कि डिलीवरी के बाद मदर और बेबी की कैसे केयर करनी चाहिए, डिलीवरी से पहले, एट टाइम डिलीवरी और आफ्टर डिलीवरी, जिससे हमें सबसे फर्स्ट तो ये लाभ मिलता है कि जो डिलीवरी के कारण बेबी और मदर की जो केयर होती है वो किस तरह से करनी चाहिए, जिसमें डॉक्टर हेमा देवाकर मैम जो थी बहुत ही अच्छे तरीके से उसने हमें ये ट्रेनिंग दी कि जिसकी मैं तारीफ़ जितनी करूँ उतनी कम है। एक्चुअली मुझे थोड़ा इंग्लिश में प्रॉब्लम था, तो उन्होंने हिंदी में एक एक वर्ड इस तरह से समझाया कि अब मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि इस ट्रेनिंग को लेने के बाद मैं हॉस्पिटल में डॉक्टर्स या पैरामेडिकल्स को जो ट्रेनिंग दूंगी, जिसको मैं 100% ही सही तरीके से दे सकती हूँ, इतना मुझे अपने आप पर कॉन्फिडेंस है। और दूसरी बात, हर डिलीवरी के बारे में जितना भी कि इंस्ट्रूमेंट कैसे ट्रे प्रिपेयर करनी है, कैसे हमें अगर डिलीवरी के बाद PPH ब्लडिंग ज़्यादा हो रहा है या फिट्स वगैरह का पेशेंट को आ रहा है, तो उसके लिए क्या मेडिसिन्स है, क्या इंस्ट्रूमेंट है और क्या जो तैयारी है, वो सब मैं पूरी तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हूँ।